Hello everyone. Welcome to part 5 of previous year gate questions from the subject Engineering Hydrology. The topic is Run-off and Hydrograph. As you can see, ये वाला जो chapter है Run-off and Hydrograph, this is very important. Maximum questions gate में जो पूछे गए हैं from the subject Engineering Hydrology are mostly from this particular chapter. I have already done part 5. So each part we generally try to solve 5 to 6 questions ताकि videos जो है वो ज़्यादा लंबा ना बने. If you want longer videos जिसमें और questions ज़्यादा हो, so please write to me in the comment box. I will try to do accordingly. और अगर आपको मेरे videos अच्छे लग रहे हैं, solutions अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, if they are helpful for you, then please do like, comment, share these videos with your friends, with your classmates जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एंट्रांस एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. एंड ऑल्सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. So let's start with today's video. The first question of today's video is, it was asked in the year of 2009. तो यहाँ पे 1 hour triangular unit hydrograph of a watershed is given. ठीक है. So if you remember last वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर. तो एक ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन टू यू जिसका पीक डिस्चार्ज इज गिवन एट 10 आवर्स एंड बेस टाइम इज गिवन टू यू इज 30 आवर्स. ओके, फाई इंडेक्स इज गिवन, बेस फ्लो इज गिवन. आपको एक रेनफॉल का वैल्यू दिया हुआ है. इन 1 आवर 5.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है. यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लड हाइड्रोग्राफ. तो एसेंशियली क्या यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको दिया हुआ है. यू आर गिवन द ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ. यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ ए फ्लड हाइड्रोग्राफ. ठीक है. ट्रांसफर कैसे करते हैं हम लोग. यूनिट हाइड्रोग्राफ और ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट मीन्स क्यू ऑफ ऑर्डिनेट यूनिट हाइड्रोग्राफ मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ. क्या मिलता है हमें. क्यू ऑफ DRH. करेक्ट. Q of unit hydrograph multiplied by the runoff gives us Q of DRH. Q means ordinate. ठीक है. Q means ordinate. ठीक है. अब DRH का जो Q है उसके साथ if we add the base flow, right, we'll get what? We'll get the Q of flood hydrograph. Simple. So what are the unknowns. Q of unit hydrograph is given. क्या है. The value is 60. So Q peak is 60. So DRH, to calculate the Q of DRH, we need the value of R. How to calculate R? R is the runoff. Runoff is equal to what? Runoff is nothing but phi index का formula, if you remember, phi index equals to what? Precipitation minus runoff divided by time, effective time. Phi index is given, precipitation is given, time is given 1 hour. So what will be the value of R? R is nothing but what? Precipitation, that is 5.4 minus phi into TE. TE is 1 hour, phi is 0.4. That means 5.4 minus 0.4 is equal to 5. R is equal to 5. So what is Q of DRH? Q of DRH is equal to Q of unit hydrograph multiplied by R. Unit hydrograph का Q is 60. So 60 multiplied by 5. 300. ठीक है. Right? But this is where? This is at 10 hours. This is at 10 hours.
बट हम लोगों को व्हाट दे आर आस्किंग एट 15th आवर, करेक्ट? दे आर आस्किंग एट 15th आवर. So if we look at the unit hydrograph, so this is 60, this is 10 hours, ठीक है, and this is 30 hours, correct? This is 30 hours. 10 hour में इसका जो peak discharge है that is 60, correct? So at 15 hour इसका what will be the value of ordinate? That means what will be this value at 15 hours? If this is 15, what will be this value? This is the ordinate Q. So क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? We have to use interpolation. So 60, ठीक है, minus, or what we can do, we can use a similar triangle concept. So 60 divided by how much? This is 30 minus 10, that means 20, is equal to what? This is Q divided by 15, right? So height for the larger triangle, height divided by base is equal to, for the smaller triangle, this is Q divided by 15. So what is the value of Q now? Q is equal to 60. Q is equal to 60 divided by 20 multiplied by 15. So 45. This is equal to 45. Right? So 15 hour mein what will be the value of DRH? So Q peak now will change to 45. Q peak will now change to 45. Oh, sorry. Q peak will now change to 45. So 45 and 45, and this will be what? This will be 225. ठीक है? So 15th hour में DRH का जो peak है that is 225. What will be the peak of flood hydrograph? 225 plus 15. So 240 meter cube per second. Right? 240 meter cube per second. Next, let us see. There is a watershed which is given to you. The question is, a watershed got transformed from rural to urban over a period of time. ठीक है? So एक watershed था जो कि rural area में था. Now that has got converted to urban area. The question is the effect of urbanization on storm runoff hydrograph from the watershed is to. तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि एक रूरल एरिया था, एक वाटरशेड था जो कि रूरल एरिया में था, वो अभी गांव से इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए टाउन, इनटू ए अर्बन एरिया, राइट? तो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्ट? ओके, द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन स्टॉर्म रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. जो हाइड्रोग्राफ था, तो पहले जो हाइड्रोग्राफ था, सपोज दिस वाज द हाइड्रोग्राफ, ठीक है? अब नाउ व्हाट हैज हैपेंड? Now your watershed has converted into a urban area. Urban area convert होने का मतलब क्या है? Urban area convert होने का मतलब है, now most of the regions, अब there are high roads, right? So urban area में converted होने का मतलब है आपका पीक जो हाईवेज है वो इंक्रीज हो गया है. मोस्ट ऑफ द लैंड जो है दैट हैज बीन कवर्ड विद ईदर कॉन्क्रीट और बिटुमेन, ठीक है? जो ट्रीज जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड. एज ए रिजल्ट क्या होता है? रन ऑफ बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सॉइल जो है वो कवर हो चुका है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? रन ऑफ विल इंक्रीज, राइट? रन ऑफ विल इंक्रीज मींस ये जो पीक डिस्चार्ज में जितना टाइम में पहुंचा है पहले, अब क्या होगा? द पीक विल बी, इसको कहते हैं, दिस पीक विल first of all the peak will increase, right? Next what will happen? The time base जो है हाइड्रोग्राफ का that will reduce, right? So what will happen? First is decrease the, first option क्या दिया है? Decrease the volume of runoff. ये तो नहीं होगा. अर्बन एरिया होता है मतलब मैंने जैसे कहा कि रन ऑफ विल इंक्रीज,
ठीक, इंक्रीज द टाइम टू पिक द डिस्चार्ज, इंक्रीज द टाइम टू पिक डिस्चार्ज। तो ये पिक डिस्चार्ज पहले जब रूरल एरिया में था, जितना टाइम लग रहा था टू पीक, दे आर सेइंग कि टाइम बढ़ जाएगा टू पीक, विच इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपका रन ऑफ बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, सेम एरिया जो है वहां पे वाटर इज रीचिंग पर्टिकुलर पॉइंट रैपिडली, क्योंकि आपका डिस्चार्ज बढ़ गया है, रन ऑफ बढ़ गया है, राइट। सो द टाइम टू पीक विल ऑफ कोर्स डिक्रीज। ये तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। डिक्रीज द टाइम बेस ये कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, सेम वॉल्यूम जो है, ये अगर रन ऑफ वॉल्यूम, ये इफ दिस वाज द वॉल्यूम, दिस टाइम व्हाट विल हैपन, द पीक इसका बढ़ जाएगा, और आपका जो बेस टाइम है, बेस टाइम विल रिड्यूस। ठीक है, डिक्रीज द पीक डिस्चार्ज ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि पीक डिस्चार्ज विल इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर सी, सो दैट इज व्हाट विल हैपन टू योर कैचमेंट। ठीक है, आपका जो बेस टाइम है, दिस बेस टाइम विल डिक्रीज, discharge will increase and your base time will decrease. Essentially, your run hydrograph will shift. ऐसा था, now this will be like this. Okay. Next, uh, a 2 hour unit hydrograph का ordinate is given to you. ठीक है, 2 hour unit hydrograph का ordinate is given to you, right? At 1 hour interval. So using trapezoidal rule for numerical integration, what is the catchment area? ऐसा ही एक similar question we have attempted in the last video. Last video हम लोगों ने जो किए हैं उसमें I have solved a similar question. So I will not repeat the solution here. I'll request you to go back to my previous video, that is part 4. वहाँ पे मैंने एक similar video, similar एक problem we have solved. So I'll request you to solve this question by yourself and kindly write the correct answer in the comment. Okay, so in the comment box please write the correct answer. All right, now uh, right, so ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चंस वी हैव डन, बट इसका क्या है, आई विल नॉट डू द कैलकुलेशन, आई विल जस्ट टेल यू how to solve this question, and I will request you to same way just solve this question. Okay, and then please let us know the solution. यहाँ पे क्या बोला है, the ordinate of 2 hour unit hydrograph is given. ठीक है, the storm of 6.6 centimeter occurs uniformly over a catchment in 3 hours. 3 घंटे में 6.6 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, और एक 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट्स इज गिवन टू यू। ठीक है, फाई इंडेक्स जो है, फाई इंडेक्स का वैल्यू इज गिवन टू यू, राइट, द फाई इंडेक्स वैल्यूज आर गिवन टू यू। Okay, फाई इंडेक्स वैल्यूज आर गिवन टू यू, सो the base flow is also given to you. What is the peak flow due to the storm, right? तो यहाँ पे as you can see 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, बट रेनफॉल जो है दैट इज फॉर 3 hours. Okay, रेनफॉल जो है दैट इज फॉर 3 hours, राइट? ओके, सो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ को फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट टू ए 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. Okay, 2 hour unit hydrograph we have to convert to a 3 hour unit hydrograph. ठीक है, so let's proceed. अब देखिए 2 hour से 3 hour कन्वर्ट करना है, तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन तो हम यूज नहीं कर सकते, you have to use a S curve, you have to use an S curve method. ठीक है, so ऐसा क्वेश्चन I have not solved previously, तो I will solve the complete question for you. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 0 1
2, so 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू 0 is 0, this is 3, this is 8, this is 6, this is 3, this is 2, and this is 0. Okay. Fine. Now, okay. So what we have to do? We have to create an S curve, right? So first let us lag by 2 hours, क्योंकि 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है. सो फर्स्ट लैग, ठीक है. फर्स्ट लैग, फर्स्ट टाइम अगर लैग करेंगे तो विल लैग बाय 2 आवर्स, बिकॉज द यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक. सो 0, करेक्ट. सो दिस इज 3, 8, 6, then your 3, then is your 2, and then 0, ठीक है. ये हो गया 7, ये हो गया 8. ओके, नेक्स्ट. सो अब इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द एस हाइड्रोग्राफ? सो what we can do, we can lag it once again by 2 hours. Okay, so 0, 0. This time it will be this ordinate unit hydrograph will lag it once again by 2 hours. So this time 0, this will be 0, this will be 3, this will be 8, this will be 6, right? So 0, 3, 8, 6, and then 2. Okay. Let us log it once again by another 2 hours. Okay. So this is second, third leg. Okay. So the same now. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this will be 0. This will be 3. This will be 8. Okay. So right. Now, what are the ordinates? S curve का ordinate जो है वो क्या होगा? Sorry. So the ordinate of S curve, ठीक है. So ordinate of S curve is 0. This is 3. This is 8. Correct. Then this is 9. This is 11. Okay. Okay. Then is your, this will be your 11, and this is your 11, and so it will be kind of like 11, 11 like this. So we have got our S curve. This is my S curve. After doing 3 lags, I've got my S curve 0, 3, 8, 9, 11, 11, 11. ठीक है. Okay. So what we have to do now? We have to S curve का ordinate I have got. I have to lag this S curve by 3 hours. So lag by 3 hours. ठीक है. We have to lag it by 3 hours. So this is ordinate of what? This or sorry, this is the ordinate of S curve. Now lag this S curve by 3 hours. So if I lag it by 3 hours, 1, 2, 3, right? So 0, then 3, right? Then 8, then 9,
and then 11, 11. Okay, so this is your, now if I subtract from this column to this column, okay, or from let's say this is column number 1, this is column number 2, right? So column number 1 minus column number 2, column number 1 minus column number 2, so 3. So first this will be 0, this will be 3, this will be 8, this will be 9, this will be 8, this will be 3, this will be 2, 0 and 0. Okay, here you have column number 1 minus 2, right? So what will be the now if I have to convert this to a unit hydrograph of how much? I have to convert this to a unit hydrograph of, first I have to convert this to a unit hydrograph of 3 hour. 2 hour का unit hydrograph मुझे दिया हुआ है. I have to convert this to a unit hydrograph of 3 hour. So this is column 3. So क्या होगा? Column 3, values of column 3, Q of column 3, okay, multiplied by 2 hour का दिया हुआ है, divided by 3. 3 hour का करना है. So जो these values, these are the Q values, multiplied by 2 divided by 3. So this will be 0, this will be 2, this will be so 8 into 2 divided by 3, so 5.3. Okay, this will be 6, this will be again 5.3. So what is my peak discharge? Peak discharge is 6. I have got the peak discharge. Okay, so peak flow, they are asking peak discharge of 3 hour unit hydrograph. This is very important. 3 hour unit hydrograph का peak discharge. So Q peak of 3 hour unit hydrograph is equal to what? 6 meter cube per second. देखिए 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक था 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो हमें यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक आई हैव गॉट, राइट? सो यूनिट हाइड्रोग्राफ से डीआरएच कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सेम, रेनफॉल दिया हुआ है 6.6 माइनस फाई इंडेक्स का दिया हुआ है 2, दैट मीन्स 0.2 multiplied by duration 3 hours, right? So this is my runoff. Runoff is equal to 6. Multiply runoff with peak discharge of DRH. Peak discharge of unit hydrograph. So Q peak of DRH equals to Q peak of unit hydrograph 6 multiplied by 6, 36. ठीक है? Plus अब flood hydrograph का we have to calculate, right? So Q of flood hydrograph 36 plus base flow is given to you 5, that is 41. The answer is 41 meter cube per second. Okay, so this is how you use an S curve. इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था that was on superposition. This question is on S curve. So दोनों मेथड ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों मेथड से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गेट में और पूछे जाते हैं रेगुलरली. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप यहाँ पे आपको दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैच ग्रुप 1 विथ ग्रुप 2. ओके, सो ग्रुप 1 में क्या है? फर्स्ट इज गिवन टू यू इज स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी. स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी हम लोग किससे मेजर करते हैं? स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी हम लोग मेजर करते हैं करंट मीटर से. सो P is 4. नेक्स्ट इवापोट्रांसपिरेशन रेट. इवापोट्रांसपिरेशन रेट हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग पेनमैन्स मेथड. पेनमैन्स मेथड एक दिस इज ए मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट इवापोट्रांसपिरेशन. सो Q2
So there is a mathematical equation which can be used to calculate evapotranspiration. Infiltration हम लोग calculate करते हैं using Horton's curve. So R3, ठीक है. And wind velocity हम लोग obviously one is only remaining using anemometer. Right? Actually any fluid का जो flow है instantaneous velocity है वो हम लोग calculate कर सकते हैं using anemometer. Okay. So the option is P4 Q2 R3 S1, option C. So with this we'll conclude today's video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा. Like always, please kindly share this video, like this video. If there is any suggestion, if you are facing any problem, write in the comment box. And please subscribe to our channel so that we can produce similar videos with faster rate. With this, I will conclude today's video. Thank you for watching.